it will definitely going to result in longer hospital stays. Expensive and limited treatment options because of antibiotic resistance. ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंड लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस रह गए हैं. बहुत सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं टू ट्रीट दी patient. So if resistance continues to rise, even small injuries and routine surgeries could become dangerous again. Okay, so this needs to be stopped. Antibiotic stewardship. So to slow antibiotic resistance, antibiotic stewardship की ज़रूरत है हमको. Antibiotic stewardship क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ. So there are several rules in antibiotic stewardship. First is antibiotics तभी खाना चाहिए जब ज़रूरी हो. Use antibiotics only when it is necessary, when it is prescribed, when it is being told to you कि ये खाना चाहिए आपको. Second is right antibiotics को चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड कि उनका अलग अलग फंक्शनिंग होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है टू डील विद द बैक्टीरिया, टू किल द बैक्टीरिया. सो चूजिंग द राइट एंटीबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग द करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या डोज प्रिस्क्राइब किया गया है, कितना ड्यूरेशन के लिए वो खाना है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग. प्रिस्क्राइबिंग के पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए इफ इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट्स अ वायरल और फंगल और एनी अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन. सो वो चीज़ कंफर्म होनी चाहिए. सो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग द एंटीबायोटिक्स. ठीक है. So hospitals worldwide are adopting stewardship programs to ensure responsible use of these antibiotics. Okay. Now there are some modern alternatives of this resistance. So researchers are developing new alternatives to antibiotics. First is phage therapy. phage therapy में क्या होता है, वायरसेस को यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है, वायरस को यूज किया जाता है दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो phage therapy is one. सेकेंड इज क्रिस्पर बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल्स. तो क्रिस्पर बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल्स में क्या किया जाता है, जीन एडिटिंग टूल्स को यूज करके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को किल किया जाता है. जीन एडिटिंग टूल्स यूज करके जो ऐसा बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है उसे किल किया जाता है. देयर आर दीज एंटी विरुलेंस ड्रग्स. जो डिसेबल्ड बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उसको डिसेबल कर दिया जाता है विदाउट किलिंग देम. तो वो डिसेबल हो जाते हैं एंटी विरुलेंस ड्रग से. नैनो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स